Hello students, today I am going to explain you about the time complexity and space complexity. Okay, in the last class we discussed what is an algorithm, how to write an algorithm. And in last class I told you that for the same task we may get more than one algorithm here. Once again I have written the algorithm here to perform the same task, that is addition of two numbers. That is for the task C is equal to A plus B. I have written three different algorithms here. Okay. This algorithm also gives you the same result, C is equal to A plus B. This algorithm also gives you the same result, C is equal to A plus B. This algorithm also gives you the same result, C is equal to A plus B. Now we are in the confusion that among these three algorithms, which one we should convert it into the program. Why we are writing the algorithms? To develop a program. Before developing the program, we are trying to write the algorithms here. Now, among these three algorithms, which one we should convert it into the program? That we are in the confusion. To solve that confusion only, they have introduced the concept called time complexity and space complexity. That is, if you are getting only one algorithm to perform the task, then there is no problem. Directly you can convert that algorithm into program here, no doubt about that. But when we are getting more than one algorithm to perform the same task, then the confusion starts here. That among the algorithms, which one we should prefer to convert into the program. Okay, there comes the concept time complexity. Time complexity is nothing but the time taken to perform the execution of the program. एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ओके, नाउ on this basis how we can finalize that which algorithm is the best one. Generally if we get more than one algorithm, हम लोग कौन से algorithm को program में convert करते हैं? The one which we feels as a best algorithm. Okay? अभी तीन algorithms हैं. अभी इन तीन algorithms में किसको program में convert करना है? Okay? So that algorithm we prefer to convert it into the program whose time of execution is less here. Okay, so if we are going for the algorithm A1, now we are roughly estimating, we don't know the exact time of execution because till now we are not converting A1 into the P1. We are assuming if we convert A1 to program P1, how much time it may take. Okay, so that depends on the number of statements you are using, the number of inputs you are using, the number of outputs you are using, the number of expressions you are taking, the number of operators you are taking. Depending on all these factors, we are roughly estimating how much time the program may take to complete the execution if we convert this algorithm into program. Say for example, अगर A1 को हम program में convert करेंगे तो इसका time of execution may be 10 seconds. Same is the case with A2. अगर हम इस algorithm को program में convert करें तो कितना time लगेगा? Let's say I got it as 7 seconds. अगर A3 को हम कन्वर्ट करेंगे तो लेट्स से इट मे टेक 5 सेकेंड्स. ये हमारा एस्टिमेटेड वैल्यूज है, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि अब तक हम इनको प्रोग्राम में कन्वर्ट नहीं करें. कौन किसको कन्वर्ट करना है उसको सॉल्व करने के लिए ही हम पूरा ये प्रोसेस कर रहे हैं. तो दिस इज नॉट द एग्जैक्ट टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, दिस इज ए एस्टिमेटेड टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन. इसका 10 सेकेंड्स है, इसका 7 सेकेंड्स है, इसका 5 सेकेंड्स है. सो विच algorithm we select as a best algorithm? As I told you earlier, which takes less time. So इन तीनों में से हम लोग को किसको सेलेक्ट करेंगे बेस्ट है बोल के? A3 को. Because among these three, which one is taking the less time here? The third algorithm.
तो हम लोग क्या करेंगे, ये A1 को नहीं लेंगे, A2 को नहीं लेंगे, किसको सेलेक्ट कर रहे हैं अभी हम, A3 को सेलेक्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या करना है, ये A3 को सेलेक्ट करने के बाद we will convert it into the program and we will try to perform the execution here. Okay, so this is just analyzing the best algorithm among n number of algorithms. If you get only one algorithm, no confusion, directly you will convert it into the program. The problem comes when you get more than one algorithm. Once again I am repeating, time complexity is nothing but the time taken to complete the execution of a program here. Okay, now why we are taking this time complexity means to solve the confusion problem here. जब भी हमको confusion हो रहा है कि कौन सा algorithm को select करना है, then we take help of the time complexity here. हम लोग roughly estimate करेंगे किसको कितना time लग सकता है execution के लिए, उसके बाद जिसको कम से कम time लगता है उसको best algorithm बोल के analyze करके बाकी algorithms को delete कर देंगे, वही algorithm को program में convert करेंगे. इसको बोलते हैं time complexity. Now what is this space complexity? Space is nothing but the space occupied in your memory by your program. अगर हम इस algorithm को program में convert करेंगे तो वो program memory में कितना space occupy करेगा उसको बोलते हैं space complexity. ओके, सो ये भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि A1 कितना स्पेस लेगा अगर उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो अगर A2 को प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना स्पेस लगेगा, अगर A3 को प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना स्पेस लगेगा. ये भी रफ एस्टिमेशन है. वी डोंट नो द एग्जैक्ट स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पर्टिकुलर प्रोग्राम, क्योंकि हम लोग अभी उसको कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, हम तो जस्ट एनालाइज कर रहे हैं कितना कितना लगेगा बोल के एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग. ओके, तो we select that algorithm as a best algorithm which occupies less space in the memory. जिसका कम से कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको बेस्ट algorithm बोल के सिलेक्ट करेंगे. So the point is time complexity is nothing but the time taken to complete the execution, and we select that algorithm as a best algorithm which takes less time to perform the execution. Space complexity. If we convert the algorithm into the program, the space occupied by the program in the memory is called as space complexity, and we select that algorithm as a best algorithm which occupies less space in the memory. इन दोनों में से देखेंगे तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज वी नो दैट द कंप्यूटर इज़ यूज्ड मेनली फॉर इज फास्टनेस. ओके, स्पीड, कितना जल्दी रिजल्ट आएगा उतना हमको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. सो अमोंग दिस टाइम एंड स्पेस अगेन वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हियर. ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन डिटेल. When we are discussing about the time complexity, we come across with the two words, that is prior analysis and posterior testing. What is this prior analysis? Prior analysis is nothing but the estimated time before converting it into the program. Just know what we have seen, that 10 seconds, 7 seconds, 5 seconds, we have given a rough estimation, no? That is called as prior analysis. The name itself is indicating prior means before. Okay, जो हम प्रोग्राम को कन्वर्ट करने से पहले ही जो एस्टिमेट करते हैं हम लोग कि टाइम इतना लग सकता है उसको बोलते हैं प्रायर एनालिसिस. पोस्टीरियर टेस्टिंग, द नेम इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग पोस्ट मीन्स आफ्टर. आफ्टर कन्वर्टिंग एक एल्गोरिथम को एक प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के बाद जो एग्जीक्यूशन होने के बाद एग्जैक्ट टाइम हमको आता है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर टेस्टिंग. रिमेंबर दैट ऑलवेज इट मे नॉट बी ट्रू दैट योर प्रायर एनालिसिस इज इक्वल टू द पोस्टीरियर टेस्टिंग, क्योंकि हम पहले इसको एनालिसिस करते हैं उसके बाद क्या है एग्जैक्ट टाइम इट मे वेरी. क्योंकि हम लोग जब एस्टिमेट करते हैं, से फॉर एग्जांपल आई हैव एस्टिमेटेड कि मेरा सिस्टम यूनिप्रोसेसर है बोल के एस्टिमेट करके आई हैव स्टार्टेड एंड मेमोरी इतना है
बोल के ऐसा कुछ स्टार्ट करके एज्यूम करके आई हैव कैलकुलेटेड द प्रायर एनालिसिस. बट रियल टाइम व्हेन आई एंटर्ड इनटू द सिस्टम एंड ए एल्गोरिथम को प्रोग्राम में कन्वर्ट करें एंड से फॉर एग्जांपल माय सिस्टम इज हैविंग मल्टी प्रोसेसर एंड मेमोरी इज आल्सो वेरिंग हियर. ओके, सो ये सब कुछ चेंज हो जाता है. दिस इज मशीन डिपेंडेंट है. ओके, एक मशीन में एक टाइम आ सकता है, दूसरे मशीन में दूसरा आ सकता है. ओके, लेकिन मैं यहाँ पर एक रफ एस्टिमेशन करी यूनी प्रोसेसर का. और पोस्टीरियर टेस्टिंग में जब हम गए तो वो सिस्टम है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है. तो क्या होता है, आपको और भी जल्दी आउटपुट आ जाएगा बिकॉज इट इज़ अ मशीन डिपेंडेंट है. Okay, so it is not compulsory that always your prior analysis is equal to the posterior testing, क्योंकि इधर तो हम लोग रफ एस्टिमेशन करते हैं. इधर जाने के बाद not only on the program, it depends on the machine also. Okay, what is the fastness of your machine, what is the processor you are using, what is the memory you are using, what are the variables you are using, what programming language you are using, इन सब के ऊपर डिपेंड होता है पोस्टीरियर टेस्टिंग. प्रायर एनालिसिस क्या है, जस्ट हम लोग एल्गोरिथम को लेके थोड़ा एस्टिमेट कर देंगे कि अगर इसको कन्वर्ट करेंगे शायद इतना टाइम लग सकता है. लेकिन इसमें जब पोस्टीरियर टेस्टिंग में आते हैं तो सो मेनी फैक्टर्स इंक्लूड्स हियर. दैट्स व्हाई वी हैव टेकन देम सेपरेटली एज प्रायर एनालिसिस एंड पोस्टीरियर टेस्टिंग. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रायर एनालिसिस इज नथिंग बट द रफ एस्टिमेशन ऑफ द एल्गोरिथम. अगर हम इस एल्गोरिथम को एक प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना टाइम लगेगा बोल के एस्टिमेट करने के बोलते हैं प्रायर एनालिसिस. और एग्जैक्ट टाइम, अगर हम लोग एक एल्गोरिथम को प्रोग्राम में कन्वर्ट करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद जो एग्जैक्ट टाइम आता है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर टेस्टिंग हियर. ओके, दिस इज अबाउट द प्रायर एनालिसिस एंड पोस्टीरियर टेस्टिंग. एंड representations, when we go for the representation, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे रिप्रेजेंट करना है. जैसे हम नॉर्मल टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंड्स हावर्स में और नॉर्मल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं किलोमीटर्स मीटर्स में, वैसे ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में रिप्रेजेंट करते हैं. उसको टेक्निकली दिखाने के लिए हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशंस लेते हैं. ओके, सो बिफोर गोइंग टू द एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, let me explain you the three cases. Okay, that is best case, average case and worst case. Okay, so ये हो गया what are the terms we are using. These two terms we use in the asymptotic notations. Okay, now I am going to explain you the worst case, best case and the average case. So when we are discussing about the time complexity, we come across with the three terms: best case, average case and the worst case. What is this best case? What is this average case? What is this worst case? I'll try to explain the concepts with an example. Here I am taking the example of linear search. What is the linear search? We will place some elements in the array and we are trying to search for any number here. ओके, हम किसी नंबर को सर्च कर रहे हैं. फर्स्ट आई विल गो फॉर द बेस्ट केस. व्हाट इज द बेस्ट केस? बेस्ट केस इज नथिंग बट टेकिंग द मिनिमम टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन. what how it is going to be done? Say for example, this is my array. Okay, in the array I place some elements 3, 7, 9, 15, 17, 1 and 25. Now I want to start the search method here and the system will ask me that enter the search element. I entered the search element as 3. I have given the 3 number to be searched in the array. इस array में 3 को search करने के लिए I have given a command. Now tell me when it starts searching. What is a linear search method? First, it compares this searching element with the first element. अगर वो नहीं है तो it goes to the next element. उधर भी नहीं है, it goes to the next element, next element, next element. इस process को बोलते हैं linear search. If I entered the searching element as is equal to 3, what happens? The 3, it will start searching for the 3. First it goes to the first element here. What is your first element here? 3. What the element you are searching? 3. So your search is successed in first attempt only.
So can I say that my searching has completed with the minimum amount of time? क्योंकि इससे पहले तो कुछ भी नहीं है. अगर हमको सर्चिंग करना है तो यहाँ से ही शुरू करना होगा, और हम लोग जब यहाँ से शुरू करें तो पहले एलिमेंट ही हमारा रिजल्ट आ गया है. तो इसको कहते हैं द बेस्ट केस, that you are trying to perform your task with the minimum time of execution. That is called as the best case. Now next I am going for the average case. Now what is this average case here? Say for example, if I am searching for the element 15 here, the searching element is 15 here. Now what will happen here? First, again same elements I have taken, but I have changed the searching element. For what you are searching here now? 15. How the searching goes on here? First 15. First it goes to the first element. It will compare 3 and 15. Both are equal? No. Now what it will do? It goes to the next element. 15 and 7. Both are equal? No. Again it goes to the next element. 15 and 9 are equal? No. Then again it goes to the next element. 15 and 15 are equal? Yes. You have taken some average amount of time, not the minimum nor the maximum. Your searching element or your program is executed for an average amount of time. Then we call it as a average case here, where the average time has taken to perform the given task. Now we are going for the worst case. What is the worst case? The amount taken, the time taken to complete the execution is maximum here. What it implies? Say for example, I am searching for the element 10 here. Now tell me, what is your searching process here? First it goes and compares 3. Search is successful? No. Next it goes to 7. Both are same? No. Now it goes to 9. Same? No. Next it is going to 15. Elements are same? No. Next 17. No. Next 1. No. Next 25. No. Now your result will be the searched element is not found in the given array. You can observe here how many comparisons it did, how much of time it has taken to complete the execution. Okay, अगर एक एलिमेंट को कंपेयर करने के लिए, say for example it has taken 1 second. Okay, तो बेस्ट केस में इसका हो गया कंपैरिजन 1 सेकेंड में. ओके, अगर हम लोग 15 को सर्च करें तो ये हो गया 1 2 3 4 सेकेंड्स का टाइम में हो गया ये. अगर हम लोग वर्स्ट केस में गए तो कितना कंपैरिजन्स लिया हो? 1 2 3 4 5 6 7 सेकेंड्स. 7 सेकेंड्स के बाद भी हमको आउटपुट आ गया सर्च एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन द अरे. सो इट हैज़ टेकन द मैक्सिमम टाइम. दैट इज कॉल्ड एज द वर्स्ट केस. अगर एवरेज टाइम नॉर मिनिमम नॉर मैक्सिमम अगर बीच में आया तो उसको बोलते हैं एवरेज टाइम. अगर मिनिमम टाइम में हमारा एग्जीक्यूशन हो गया तो उसको बोलते हैं बेस्ट केस. सो रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर, बिकॉज इन दिस इंट्रोडक्शन पार्ट he maximum concentrates on the asymptotic notations and time complexities in your engineering final examinations. Okay, he may ask you that what is a time complexity and explain the asymptotic notations. This is the question you can expect in the final examination. So if you are going to the asymptotic notations, you should able to understand what are these terms and what is prior analysis and posterior testing. Okay, let me repeat it once again. Time complexity is nothing but the time taken to complete the execution.
So in this we select only that algorithm which takes minimum time for the execution, and in that we have discussed what is prior analysis and what is posterior testing. That is doing the time calculations before program, after program. And the next one is cases: best case, average case and worst case. Best case means minimum time of execution, worst case means maximum time of execution, average case means in between the best and the worst case of execution. This is about your time and space complexity. Now we are going for the most important topic, that is asymptotic notation.